Hello investors. In today's video, we will discuss intraday and delivery trading. Intraday and delivery trading में दो important differences होते हैं. पहला difference, time horizon. Intraday positions are cleared at the end of each trading day. अगर आपका पोजीशन लॉस में है, फिर भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा. Delivery trades, however, can be held on for as long as you want. दूसरे डिफरेंस से पहले एक सिमिलैरिटी की चर्चा करते हैं. इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर्स का फुल प्राइस पे किए बिना ट्रेडिंग कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड मार्जिन ट्रेडिंग एंड इट्स पॉसिबल इन डिलीवरी ट्रेड्स एज वेल. लेट्स टर्न टुवर्ड्स द सेकंड डिफरेंस, ब्रोकरेज फी. इंट्राडे ट्रेडिंग की ब्रोकरेज फी डिलीवरी ट्रेडिंग से कम होती है. To pick one from these two, decide your time horizon, risk appetite, and investment style. If you have a short time horizon and a high risk appetite, then you can go for intraday trading. If you have a low risk appetite and a longer time horizon, then delivery trading might suit you. To know more, log on to www.indiainfoline.com. Subscribe to our channel to know the markets better. Download the IIFL Markets app to start your trading journey.